Okay. Sahil and Shaheen, can you see the newspaper on your screen now? Is it visible to you? No, not yet, sir. Yes, sir, it's visible. Yes, sir, it's visible. Okay, fine. So let's start with today's newspaper analysis. As we all know, that reading newspaper is very much important for qualifying the UPSC exam, because whatever we study in theory or whatever we study in basic books and basic concepts, how it is practically being implemented, that's what we come to know in newspaper. And as we all know that for the last 2 to 3 years continuously, the questions in UPSC exam, whether it is in prelims exam or whether it is in mains exam, majority of the questions are being asked from the current affairs, or they are linked with the current affairs. And as my observation, for the last 2 to 3 years, maximum question in mains exam as well as in prelims exam, that is being asked from the Indian Express. So earlier, the majority of the questions were used to be asked from the Hindu, but the trend of the UPSC exam has changed over the last 2 to 3 years. And as per that recent trend, majority of the questions are being asked from the articles or the news or the terms which are continuously coming in Indian Express. So that is why we will be studying the Indian Express today. So that's what you can see. The first and very, very important news, like in GS paper 3 in this exam, and that topic is called Achievements and Developments in Space Technology and Achievements of Indians in Space Technology. So every year UPSC do ask some questions with respect to that, what as a India we have achieved in space technology, because we all know that India is one of the dominant player, and India is one of the you can say the only few countries in the world which is having a good capability and infrastructure as well as the space टेक्नोलॉजी इसरो के माध्यम से हमने बहुत बड़े स्पेस मिशन को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है. So Aditya L1 and ISRO's mission to study the sun set to be placed in final orbit tomorrow. Now, as a UPSC aspirant, you need to know that what are the achievements of India in space technology in recent year. That's what you need to know. And then factually आपको ये चीज पता होना जरूरी है कि what is Aditya L1. So all of you please write it down. आज आप जाकर क्या करेंगे, ये आदित्य L1 मिशन क्या है. Now Aditya is a name of a it is a name of a god in Rigvedic period. अगर आप Indian history को पढ़ोगे तो उस समय में you can come to know that the name which has been given to the Rigvedic gods is there are so many different names of the Rigvedic gods. That's what you can check it out here, that the name which has been given to the mission which has been launched by the Indian Space Research Organization, that is ISRO, is Aditya. So what is the main purpose of this mission? To study the sun. मतलब sun का जो nature है इसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं. Can so much of such money, not only India, why the countries like USA or even UK or European Space Agency, as well as some other countries like China, etc., why they are spending such a mission to the planets like Moon or Mars or Sun? What could be the reasons for that? क्या purpose हो सकता है? Sahil, any idea about it? Like why we are spending crores of rupees for such type of missions? Yash, Shaheen or Bhakti, you can tell me. Like हो सकता है this question might be asked to you in interview, like why we are spending such money. Yes, Shaheen, can you please bit louder? I think I'm not getting your voice clearly. Can you please bit louder? सर ताकि हमें वहां के रिसोर्स वगैरह पता चल जाए कि Okay, so resources अगर हमें पता चल जाए, we can use it. Apart from that, one more important reason that why we are having such type of missions or why such type of experiments. There are so many such experiments which are being carried by the space technologies of each and every country, not every country, but majority of the countries. The one reason is that, you know, we will come to know that how the universe originated. Like why we are studying sun, one of the important reasons that by studying the sun, we will come to know the how the universe has originated, how the universe has been created. So the mission, like ISRO ka jo mission Aditya L1, this will be studying the sun. So this mission which India is planning, it is set
टू बी ऑर्बिटेड टुमारो। तो कल हमारा जो इसरो का ये जो आदित्य L1 का मिशन उसको लॉन्च किया जाए। सो आज आपको क्या देखना है, आदित्य L1 क्या है ये आपको चेक करना है। उसके अलावा मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप ब्रॉडर वे में अगर कुछ देखना चाहते हो तो दैट इज इसरोज अचीवमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी और इंडियाज अचीवमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी which will be helpful for you in mains exam. And in prelims exam you need to know what is this Aditya L1 mission, what is the purpose of this mission, what are the technical things about Aditya L1 mission. That's what you need to know. Is it clear, Sahil? Yes, sir. Chale, now let's move on to the next page. Recently Indian government has made some policy with respect to the Indian defense services, that is army. The Modi government or the current government has a policy of a new policy that is called Agniveer. Agniveer scheme है जिसमें all of you must be knowing that in army the jawans will be recruited for 4 years and after that 4 years they will be given retirement. So this policy is being criticized by many people. So one of the person who has criticized this policy, Army Chief General, that is Narmani. So what are his opinion about this Agniveer scheme? That's what you can come to know by reading this article. तो हो सकता है in mains exam they might ask you your opinion with respect to the recent policy of the Agniveer scheme. So that's what you can make your own opinion by reading this article. So please read this explain page वाला जो होता है जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो in any news if you get this explained box you have to read that explained box to understand what that issue is. So this issue is about the Agniveer scheme, right? So it is mentioned here that the former India's Army General Narwani says that he has written a book, that is what is called a memoir, with details on the standoff in Ladakh comes at a time when India and China are still holding military and diplomatic talks to resolve the situation along the LAC. So as we all know that India and China is having some border dispute in Ladakh as well as in Arunachal Pradesh. So General Naravane has written a book. In that book, he has written everything in detail that what type of standoff is happening between India and China. So in GS paper 3, there is one topic called issues related to border management. मतलब border management करने के लिए क्या issues हैं ये आपको पता होना जरूरी है. So here you need to know as a UPSC aspirant, you need to know that what is the dispute going on between India and China in Ladakh as well as Arunachal Pradesh with respect to the border. So India और China के बीच में ये जो लद्दाख रीजन को लेकर जो dispute चल रहा है, diplomatic talks are going and as well as military talks are going to resolve the situation. मतलब इंडिया और चाइना के बीच में जो dispute चल रहा है उसको resolve करने के लिए military level पे discussion हो रहा है between India and China and diplomatic level पर भी इस पे discussion हो रहा है. ऐसा सिचुएशन में ये किताब उन्होंने लिखा है. The last disengagement was September 2022 in the Gogra Hot Spring area. So please write it down. ये Gogra Hot Spring area कहाँ है वो आपको देखना है. What is the strategic importance of this area? That's what you need to know. हो सकता है the question might be asked you in prelims exam that what is the importance of this Gogra Hot Spring area. तो ये लद्दाख एरिया में है. तो कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि which among the following regions of Ladakh was in the news recently with respect to India-China border dispute, ऐसे पूछा जा सकता है. So you need to know where this Gogra Hot Spring area is located. So Indian troops, that is Indian Army के जो military के जो forces हैं, the Indian troops continue to be denied access to traditional patrolling points and the issue of the PLA presence in the Depsang Plains and Demchok regions. तो इंडिया की जो आर्मी है, चाइना की जो आर्मी, चाइनीज आर्मी इज कॉल्ड एज PLA, दैट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ऐसे कुछ नाम है इसका. सो दिस आर्मी इज प्रेजेंट इन दैट एरिया और ये डिस्प्यूटेड एरिया है. मतलब इंडिया का कहना है कि ये एरिया हमारा है और चाइना का कहना है कि ये एरिया हमारा है. व्हिच आर दोस डिस्प्यूटेड एरियाज? वन इज कॉल्ड डेप्सांग प्लेन्स एंड अनदर इज कॉल्ड डेमचोक रेंज. सो प्लीज राइट इट डाउन. ये आपको चेक करना है. डेप्सांग प्लेन एंड डेमचोक रेंज कहां पर है एंड इस रीजन को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में क्या है डिस्प्यूट. क्लियर? I hope you are noting it down. Sahil and Bhakti, please note down these terms. You have to go and check it out. ठीक है? Question can be asked to in prelims exam as well as mains exam में भी पूछा जा सकता है कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या डिस्प्यूट है और कौन से एरिया को लेकर डिस्प्यूट है. क्लियर? Sir, that article is not visible.
दैट आर्टिकल इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है, आप बस उसको पढ़ लीजिए, यू जस्ट रीड दिस आर्टिकल, यहाँ तक आपको पढ़ना है। ओके लेकिन ओके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये जो टर्म्स होते हैं ना, ये जो एक्सप्लेन पेज में जो टर्म्स आते हैं, जैसे कि आप ये डेप्सांग प्लेन्स है, डेमचौक ये रीजन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये गोगरा हॉट स्प्रिंग क्या, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें इस ये जो बुक इन्होंने लिखा है जनरल नरवणे ने, उस बुक का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिप्लोमेटिक डिस्कशंस हो रहे हैं और मिलिट्री जो डायलॉग हो रहे हैं उस पर उसका असर हो सकता है। दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस पेज। तो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट यू नीड टू नो व्हाट आर द इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और कौन से रीजन में बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है, दैट्स व्हाट यू नीड टू नो। क्लियर? यस सर ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Now I will be directly going to the editorial page. Two important news on the front page today. Fine. As we all know, every year when winter approaches, when winter is there is problem in the Delhi. So Delhi mein temperature is very low during these days, and because of that low temperature, pollution and fog is one of the important issue in Delhi. So उससे related एक news है, दिल्ली में टेम्परेचर बहुत कम हुआ है, even शिमला and धर्मशाला are also having very colder day. This news is also important for climate change point of view. तो GS पेपर 3 में एक टॉपिक है, issues related to global warming and climate change. So we can see in recent 4 to 5 years we have seen such very extreme climate events. एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट मतलब क्या, कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना, टेम्परेचर बहुत कम होना, और बारिश कुछ जगहों पर बहुत कम होना या बारिश कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा होना। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है, जो एवरेज या नॉर्मल जो क्लाइमेट हुआ करता था उससे उसमें एक्सट्रीमिटी होना या उसमें वेरिएशन होना। So because of this variation, because of this climate change, we can see that during summers we are having very hot days, and during winters we are finding very extreme low temperature days, and during rainy season कुछ एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, मतलब उस एरिया में नॉर्मली जो एवरेज बारिश हुआ करती थी उससे कई गुना ज्यादा बारिश पिछले 4-5 सालों से ऑब्जर्व किया जा रहा है। सो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जो असर है वो अलग जगहों पे अलग 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 तरह से हो रहा है। So that's what you need to know. Because of this global warming and climate change, we can see that we have found colder day in Shimla and Dharamshala, and Delhi also having a very low temperature. So first such type of severe cold day of the season. तो ये सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पर दिल्ली और आसपास के एरिया में पाया। That's what you can see here. So this winter, the capital city, that is Delhi, saw the highest number of smog episodes in 6 years. The smog is one of the important issue in Delhi. दिल्ली में जब टेम्परेचर कम होता है तो उस समय स्मोक बहुत बड़ी पैमाने पे होता है. So that's what you can check it out. So as a UPSC aspirant, you need to know that during the winter days, this problem, regains again and again in Delhi and surrounding regions. Newspaper is visible to all of you, right? Chalo, now let's move to the next page. So remaining news are political news. If you are interested in politics, you can read it out. Otherwise, we can directly go to the editorial page. Here, there is one more important point with respect to the UPSC exam point of view, that is electronic voting machine. तो as a UPSC aspirant, you need to know कि अभी फिलहाल इंडिया में EVM से वोटिंग होता है, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन से होता है, and conducting free and fair election is a responsibility of the Election Commission of India. In basic Indian politics class, I will be discussing the responsibilities of the Election Commission and why it is very important to conduct the free and transparent elections in any democracy like India. So that's what I will be discussing with you. So EM को लेकर कुछ issues है, EM को लेकर कुछ aspirations है या apprehensions है about the political parties. So what are those questions? That's what you can come to know by reading this article. तो इसको पढ़ लीजिए. What is that? Doubts which are being raised with respect to electoral voting machines in India. क्लियर? तो इसको आपको बस पढ़ना है कि क्या
चल रहा है। Now let's move to the next page. We will be going for the today's editorial, that is the right of support. So editorial is with respect to the minimum support price. Recently also when I have taken the newspaper class 2 days back, उस समय में हमने देखा था कि minimum support price is again one of the important issue in India. In basic class, I will be explaining what is minimum support price, what are the objectives of the minimum support price, and what are the issues associated with the minimum support price. आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? बेसिक आइडिया कुछ है कि क्या होता है? व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? यस साहिल। यस सर, गवर्नमेंट एक अश्योरिटी देती है कि इस प्राइस पे हम वो खरीदेंगे, पर्टिकुलर प्राइस। हेलो, यस साहिल, दिस अश्योरिटी इज बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स दैट okay, क्या गवर्नमेंट गिव्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू ऑल क्रॉप्स इन इंडिया which are grown by the government? नो सर, No, there are certain selected crops on which government gives the minimum support price. तो minimum support price जो होता है, that is the minimum price guarantee given by the government. So is it a constitutional right or it is a legal right? या दोनों भी नहीं है? Is MSP a legal right in India now? Any idea about it? शाहीन, भक्ति, जो गारंटी दी जाती है बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स, क्या ये लीगल राइट है या नहीं है? एनी आइडिया और नॉट? साहिल? नो सर, शायद लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, लीगल राइट है। आर यू श्योर अबाउट इट साहिल? नो सर, आई एम जस्ट गेसिंग। ठीक है, तो अभी आज आपको जाकर देखना है कि इज एमएसपी लीगल राइट और नॉट, मतलब लीगली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट टू बाय द क्रॉप एट द प्राइस व्हिच इज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट। मतलब ये जो एमएसपी जो होता है, एमएसपी एक मिनिमम गारंटी होती है जो गवर्नमेंट देता है फार्मर्स को उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। सपोज अगर वो क्रॉप मार्केट में अगर नहीं बिकता है तो क्या गवर्नमेंट को उस प्राइस में खरीदना लीगली बाइंडिंग है या नहीं है, वो आपको आज जाकर चेक करना है। क्लियर? यस शायद सर लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब ना कॉन्स्टिट्यूशनली है ना लीगली। लीगली बाइंडिंग नहीं है। यस सर। ओके ठीक है, आज आपको चेक करना है। बट एनीवेज आज के ये एडिटोरियल में क्या है वो देखना है। Existing MSP and procurement policy favors only few crops. This is one of the important issue. मतलब जब भी हम whenever we कोई बेसिक टॉपिक हम देखते हैं तो उसका we need to know what are the issues associated with it. Right? Hello? Am I audible to you? यस सर। यस। तो अब यहाँ पर क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक इंपॉर्टेंट इश्यू जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि जो गवर्नमेंट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो देता है फार्मर्स के लिए, सो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग एमएसपी एंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फेवर्स ओनली फ्यू क्रॉप्स। मतलब कुछ ही ऐसे क्रॉप्स है उनको वो फेवर करता है, जैसे कि राइस है, व्हीट है या शुगर केन है, दिस क्रॉप्स को वो फेवर करता है। कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं उनके वो अगेंस्ट में, जैसे हमने रिसेंटली देखा था, इट सिंस द गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग गुड एमएसपी to the edible oil seeds or to other crops, so what farmers do, grows only the crops which are having high MSP। मतलब फार्मर वही क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जो तो नॉर्मली इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली, जो इंडिया में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट प्रोक्योर्स ओनली राइस, व्हीट एंड सम ऑफ द पल्सेस। गवर्नमेंट डोंट प्रोक्योर सम अदर क्रॉप्स एंड दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जो जिन क्रॉप्स को हाई एमएसपी दिया जाता है या जिन क्रॉप्स को गवर्नमेंट प्रोक्योर करता है। गवर्नमेंट उसको खरीदता है
और अपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन है उसमें वो स्टोर करता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो पार्ट है वहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है एज वी ऑल नो। तो एक इश्यू है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यू ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जीएस पेपर 3 में यह टॉपिक है, दैट इज इश्यूज रिलेटेड टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो वहां पर आपको ये पॉइंट आज ऐड करना है दैट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर्स ओनली फ्यू क्रॉप्स like rice, wheat and sugarcane etc. and that is why it is creating market distortions। मतलब इससे क्या हो रहा है कि मार्केट में डिस्टॉर्शंस हो रहा है। मार्केट में डिस्टॉर्शंस का मतलब क्या होता है कि कुछ क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। जैसे इंडिया में मोर देन 500 मिलियन टन प्रोडक्शन किसका है, राइस एंड व्हीट का, बट अदर क्रॉप्स लाइक एडिबल ऑयल, समटाइम्स पल्सेस, समटाइम्स अनियंस, पोटैटोज या बाकी के जो क्रॉप्स है जिन्हें इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, दिस क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन बाय द फार्मर्स इन इंडिया and this is what is called as market distortion. All of you understood how MSP is creating a market distortion and how it favors only to the pure crops. Bhakti, Sahil, is it clear to you? तो ये एक इश्यू है, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको ये पता होना जरूरी है। सो इट नीड्स टू बी करेक्टेड ऑफ कोर्स। आपको जैसे कि एज ए आईपीएस एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो, यहां पर आपको क्या पता होना जरूरी है। राइट डाउन 3 पॉइंट्स। वन इज व्हाट इज एमएसपी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एमएसपी, ये एमएसपी क्यों दिया जाता है फार्मर्स के लिए, इज इट लीगली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर द क्रॉप्स फ्रॉम द farmers at the MSP, and like what are the problems associated with this MSP, that's what you need to know. And lastly, how it will be corrected, इसको correct कैसे किया जाता है, because it is creating some market distortion and it needs to be corrected. तो last paragraph में explain किया गया है कि how this market distortions or this existing MSP policy needs to be corrected. So what are the issues associated with the minimum support price? That's what you can come to know by reading this article. You need to read this article. Clear? फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पूरा आर्टिकल आपको क्लियर, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता इसमें से, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू कैन मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन इट और यू कैन आस्क मी इन टुमारोज क्लास। क्लियर? फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज dispiriting no show. Indian Science Congress has missed its date. It faces a credibility deficit but can be salvaged and repaired. इंडियन साइंस कांग्रेस का मतलब होता है एवरी ईयर एक एनुअल इंडिया में प्रोग्राम होता है दैट इज कॉल्ड साइंस कांग्रेस, जिसमें इंडिया के सारे जो साइंटिस्ट और कुछ इश्यूज पे, साइंटिफिक रिसर्च पे वो डिस्कशन करते हैं। सो दिस इंडियन साइंस कांग्रेस वाज नॉट हेल्ड दिस ईयर। इसके लिए few people are not very happy with this. तो क्या ये इश्यू है? जस्ट रीड इट आउट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Okay, there is one issue with respect to the functioning of the Indian Parliament. As we all know, what is the major or rather than parliament, you must have studied कि इंडिया का पार्लियामेंट का सबसे प्राइमरी या सबसे पहला काम क्या होता है? What is the primary function of parliament? Although there are multiple responsibilities and functions of the parliament, in GS paper 2 there is one topic called functions and responsibilities of the union and state legislature. लेकिन both union and state legislature के एक सबसे पहला और important काम क्या होता है? Sir, making laws. Sahil, can you please unmute yourself and tell me? Yes, Shane, you can tell me. Sir, What is the Making primary laws. function of parliament? Sir, सबसे important काम. to make laws. Sir, to make laws. To make laws, that is legislate. Yes, sir. Important. So what process of legislature in India? मतलब इंडिया में कानून बनाने से पहले उस पर डिस्कशन होता है या कानून बनने के बाद में डिस्कशन होना चाहिए? Like
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से द लॉ शुड बी डिस्कस बिफोर द पासिंग द लॉ, जो भी ड्राफ्ट लॉ होगा, या लॉ पास करने के बाद में उस पर डिस्कशन होना चाहिए और बाद में करेक्शन करना चाहिए. व्हाट शुड बी द आइडियल वे? सर पहले होना चाहिए डिस्कशन, उसके बाद पहले लॉ होना बनना चाहिए. चाहिए. राइट, सही. So in GS Yes, paper sir. 2, when I will be taking the basic Indian polity class and when I will be discussing the how the laws are passed, the process of passing the law, whenever I will discuss with you, उस समय में मैं बताऊंगा कि पूरा प्रोसेस क्या होता है. As per Derek O'Brien is a member of Parliament of Rajya Sabha. He is a member of Parliament of Trinamool Congress, which is one of the important political party in India from West Bengal. So he has been recently suspended by the Speaker of India. That also we will be discussing with you. So he has written an article कि as a UPSC aspirant सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, what is the structure and component of the parliament, how the laws are passed in India, what is the process, मतलब constitutional provision क्या है with respect to the with respect to the constitution, sorry, with respect to the you can say लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया. दैट्स व्हाट यू नीड टू नो. अब यहाँ पर उसको लेकर कुछ इश्यूज, लाइक व्हाई वी रीड न्यूज़पेपर. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेसिक रीजन दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड द न्यूज़पेपर इज दैट यू नीड टू रीड द न्यूज़पेपर टू अंडरस्टैंड द इश्यूज. अगर आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, दैट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम अ कैंडिडेट दैट they need to have a view on conflicting socio-economic and political issues of India. तो बेसिक में आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट कैसे होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको आप पढ़ते हो, लेकिन उसको लेकर क्या इश्यूज चल रहे हैं, करंटली क्या इश्यूज चल रहे हैं, दैट यू कैन कम टू नो फ्रॉम द न्यूज़पेपर इटसेल्फ. और जब भी यूपीएससी मेंस एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका कंटेक्स्ट जो है, दैट कंटेक्स्ट यू कैन कम टू नो ओनली बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर, दैट व्हाई यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन. क्लियर? नाउ वी कैन सी हियर एज पर डायरेक्ट O'Brien, फिलहाल का जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट अप्रोच इज लेजिस्लेट फर्स्ट, डिस्कस लेटर. सो व्हाट इज दैट अप्रोच? कि पहले कानून बनाइए और बाद में इसको डिस्कस करिए. दिस इज द अप्रोच एंड दिस इज नॉट करेक्ट. दैट्स व्हाट ही फील. सो इज द पासिंग ऑफ 3 क्रिमिनल लॉज. रिसेंटली 3 क्रिमिनल लॉज इंडिया में पास हो गए. तो आपने शायद पढ़ा होगा कि इंडियन पिनल कोड में कुछ चेंजेस किए गए हैं. सो दिस इज नॉट अ राइट वे. दैट्स व्हाट डेरेक ओब्रायन इज. ठीक है, तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट व्हाट यू नीड टू नो दैट देयर आर सर्टेन इश्यूज विद द वे द बिल्स आर बीइंग passed in India or the laws are being passed in India. Clear? Yes, sir. चलिए, now let's move on to the next page. My teacher and my guiding light. This is an article by the Kashmiri political leader. उनका एक आर्टिकल है. If you want to read, you can read it out. Why to read such type of articles? Because it will help you in understanding how to write an effective essay. That how he has started the essay and how he has ended the essay. That's what you can come to know by reading this article. इकोनॉमी पेज, which is again very important for us. जो भी हम बेसिक इकोनॉमी पढ़ते हैं उसके करंट इकोनॉमिक इश्यू दैट वी कैन कम टू नो इन दिस आर्टिकल. So now let's move on to the economy page. Need more security on Red Sea road. आज आप जाकर चेक करेंगे रेड सी कहां पर है, where this Red Sea is located, and this is one of the most trafficked sea route in the world. मैंने पूरी दुनिया में जो सी रूट्स है, there are so many sea routes in India. तो ये रेड सी रूट कहाँ है ये आपको देखना है. And why there is need to have a more security on this Red Sea route, that's what you need to know. So there is one topic called maritime security. Maritime security मतलब जो भी ओशंस में जितने भी सारे शिप्स जाते हैं उन्हें सिक्योर करने के लिए एक सिक्योरिटी होने की जरूरत है. इस साल के मेंस एग्जाम इन 2020
3 mains exam, there was one question asked in GS paper 2. GS paper 2 में last topic है. Anyone knows what is the last topic of GS paper 2? जिसने सिलेबस देखा होगा, आपको याद है GS पेपर 2 में लास्ट टॉपिक क्या है? साहिल, डू रिमेंबर व्हाट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ GS पेपर 2? साहिल, शाहीन. Yes, sir. Important international agencies, Yes, institutions. important international organization and their mandate. This is the topic of the GS paper 2, the last topic of GS paper 2. तो जैसे मैंने आपको ये कहा था ना कि ये मेरीटाइम सिक्योरिटी इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द इश्यू एट इंटरनेशनल लेवल. So any idea which is the international organization which take care of this maritime security? एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर जो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काम करता है, या वो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी. उस पर क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर 2023 मेंस एग्जाम. So today what you will be doing today, you will go and check it out. 2023 mains exam GS paper 2 last question, that how the questions are asked on international organization. That's what you need to know. और उसके बाद में आपको इस न्यूज की इंपॉर्टेंस समझना है. क्लियर? Is it clear to you? Yes. Check it. You will be messaging to me in group that what is the name of that organization which has the responsibility of international maritime security. Clear? Yes. और ये रेड सी कहां पर है और ये रेड सी रूट कहां है वो भी आपको देखना है. आपको ज्यादा सिक्योरिटी की क्यों जरूरत है? दैट्स व्हाट यू नीड टू नो. Government may slash disinvestment target for next fiscal by 40%. So what is this disinvestment? ये disinvestment क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है? That I will be discussing with you in basics of Indian economical class. गवर्नमेंट बजटिंग नाम का एक टॉपिक है जिसमें इन गवर्नमेंट बजटिंग इन नॉन टैक्स रेवेन्यू we are having one of the important sources of the revenue of the government, that is called disinvestment. तो ये जो disinvestment का जो टारगेट है वो अगले फिस्कल ईयर में, मतलब नेक्स्ट गवर्नमेंट बजट का जो ईयर है उसमें टारगेट को कम किया जा रहा है. Now what is the importance of disinvestment? डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है या डिसइन्वेस्टमेंट को जब कम किया जाता है तो ओवरऑल क्या इफेक्ट होता है इंडिया की इकोनॉमी पे, गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे? दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इन द बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक क्लास. बट एनीवेज आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कम करने जा रहा है अगले फिस्कल ईयर में. फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर. Now over the half of IPO in the rate. So what is IPO and what are startups? That also I will be discussing with you in the economic class. ये आपको पॉइंट लिख कर रखना है, आपको चेक करना है what is IPO and what are startups, what are issues associated with that I will be discussing with you when I will be taking the basics of Indian economic class. Explain page is also sometimes important. In the last 2 to 3 years, especially in prelims exam, majority of the questions are asked from explain. आज का जो explain page है, I don't think that is important for UPSC exam point of view. But लेकिन आप देख सकते हैं, if you want to know the structure of the Ram temple, that's what you can come to know. For those who have attended my basics of Indian history class, by looking at this picture, can you tell me this structure or the design of this Ram temple, is it a Nagara style of temple architecture or Dravida style of temple architecture? Like those who have attended or those who have studied Indian history, there are two types of temple architecture which has been developed in India during the ancient Indian history: Dravida style and Nagara style of temple architecture. Sahil, do you remember that? I think yes, I have taught you this. So ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर का जो स्टाइल दिख रहा है, is it a Nagara style or it is a Dravida style of temple architecture?
सर ये नगरा स्टाइल है। अच्छा, which feature helps you in saying that it is the Nagara style? मतलब कौन सा फीचर यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी वजह से नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है ऐसा आप कह रहे हो? सर इस पे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, मतलब बहुत सारे दिख रहे हैं। Right. So one of the important feature of the Nagara style of temple architecture is that there are multiple shikhars and heights of the shikhars are different. They are not uniform. Right? Like a smaller shikhar and much more larger shikhar and one more last very large shikhar. ये ऐसा क्यों होता है? Like why it is like this in the Nagara style of temple architecture? Sahil? Why we have shikharas with different heights in Nagara style of temple architecture? Because I think they have heredity in their gods. Like one god is more. Hierarchy of the gods. Like gods are Yes, having sir. hierarchy. Like there are some smaller gods, then greater gods, and much greater gods, and very great gods. Like so, this is one of the important feature of the the Dravida style of temple architecture, where multiple deities, multiple idols, or multiple the deities are kept in different the shikharas. So a smaller god is kept in this temple, this temple, this temple, and this temple. So this is the important feature of the temple architecture. ठीक है, तो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट यू नीड टू नो दैट व्हाट आर द कि ये जो अयोध्या के जो टेंपल बांधा जा रहा है, सो दिस इज हैविंग अ नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर. क्लियर? यहाँ पर लिखा है की फीचर्स ऑफ दिस टेंपल. कैन यू सी हियर? built in Nagara style of temple architecture, Lord Ram Lalla in Sanctum Sanctorium. मतलब सबसे बड़ा जो शिखर है ना, यहाँ पर राम लला की आइडल होगी. 5 मंडपास, like 5 mandapas, nritya mandapa, ranga mandapa, sabha mandapa, prarthana mandapa and kirtan mandapa. जैसे हम when we study the temple architecture in India, we come to know that there are different types of mandapas, right? So these are the mandapas. ये जो मंडप हैं ये अलग-अलग मंडप है. That's what you can see here. So that is nritya mandap, ranga mandap, sabha mandap, prarthana mandap and kirtan mandap. Clear? Is it clear to you? Then how many statues of deities on pillars and walls? So all these features have been explained. अब आपको यहाँ पे क्या करना है? You just need to know GS पेपर 1 का जो टॉपिक्स है इंडियन आर्किटेक्चर, वो आपको पता चल जाएगा by reading this article. So you have to connect it, like whatever we study in history book, you have to connect it with the current affairs. So this is what is called connecting the current affairs. Clear? Fine. So this is all there in the today's newspaper. I hope you have noted down that which things you need to check it out. Any doubts for the today's class? Shaheen, Bhakti, Sahil, am I audible to you? Yes, sir. Any doubts, Sahil? No, sir. Check it. So we'll stop it here now. Tomorrow morning, we'll continue with the class as it is. So morning probably around 8 o'clock or maybe around 8:30 I will be taking the newspaper class, and evening we will be continuing with the basics of Indian polity class. Fine? Okay. So good night to all of you. Take care. See you in the morning.